Hello, friends. Namaskar. Good evening. Welcome you all to another enlightening episode of Revival Sutras Sunday. यहाँ हम बात करते हैं getting your mind, body and spirit all aligned through spirituality, self-discovery and more for your holistic wellness. I am your host Sangeeta, an occult healing therapist, a spiritual coach and founder of Arcade Universe. And it's my pleasure to be your guide in this transformational journey. So welcome you all once again. आज हम बात करेंगे an interesting concept where spirituality meets psychology. While spirituality helps in self-discovery and to find one's purpose in life and for one's journey in the holistic wellness, psychology plays an important role in understanding the connection of mind and body in a better way. Overall, both are like quite connected to each other. Let's understand this in a better light. So, welcoming our today's guest, Ms. Aarti Ahuja. Aarti is an independent practicing psychologist working as Tattva Studio, simplifying wellness, and she is the CEO of Burn Healing Foundation, also pursuing her PhD in health and social psychology as well. Hi Sangeeta, thank you for having me over today. It's a beautiful Sunday and we have been celebrating so many festivals this week. Everybody is already in their wellness spirit, I believe. Let's see what Sangeeta has in store for us and what she wants to know about wellness today. Yes, Aarti, I'm extremely happy to welcome you in today's episode. Thank you so much for coming here. So friends, this day is like people are very much concerned about their mental wellness and mental health, and like everyone after COVID especially are talking about it so much. So let's understand it from Aarti. Why it is so important to revive our viewpoint on this mental health and wellness today. Is there any shift after the COVID pandemic? So is this interest in wellness or mental wellness and the psychological perspective is for well-being is going to stay for long? So let's understand it from Aarti. Well, as Sangeeta, you rightly said, COVID was a pause in human welfare, and that encouraged the most reluctant amongst us to take care of ourselves first and then attempt in being a part of the society. Or a lot of people came back to taking care of themselves because they were taking care of others in the society. एक किस्म से एक कलेक्टिव अवेकनिंग हुई है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड वेल बीइंग, जहां पे साइंस ने भी इसको एक वेटेज दिया है एंड आज के टाइम में हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि एक माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन है जिससे एक हमें वैलिडेशन मिलती है एज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स वेलनेस एंड वेल बीइंग. सब कुछ इंटीग्रेटेड है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. So this you mean to say it people have started getting more aware of this after COVID especially. So yeah. हाँ जी. So is of course they have. Yeah. So help us to understand, like, is there any difference between wellness and well-being? Means from the lens of psychology. So is both the same, or means we talk are the same word, different meaning, or like different meanings are attached to that? We are just not knowing what is wellness and what is well-being. So when do we have to apply well-being term and wellness term? So I'm glad, Sangeeta, you really got me thinking on this question, and by asking this, इसका आंसर ना थ्योरी में तो है, लेकिन और भी सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए एक ऐसे देखते हैं. वेलनेस एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ब्रेन एक कॉन्सेप्ट है.
Wellness is the complete integration of your physical, mental, and spiritual well being. It fuels the body, engages the mind, and nurtures the spirit. और आप इस डेफिनेशन में ही देखो, स्पिरिचुअल वेलबींग आया तो वेलबींग एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में वेलबींग की डेफिनेशन एज सच जो हमने समझी है ओवर इयर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वो है दैट it can be understood as how people feel and how they function both at a personal and social level. Human beings are after all social beings, and हम कैसे अपनी लाइफ को evaluate करते हैं दोनों एस्पेक्ट पे, वो वेलबींग होती है। और जब हम साइकोलॉजी के थ्रू बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये आपको टर्म बहुत सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन में मिलेगी ऑनलाइन। एंड इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी से कितने सेटिस्फाइड हैं। इसके दो पहलू हैं, जैसे हर चीज के जिंदगी में दो पहलू होते हैं, वेलबींग के भी दो पहलू हैं। एक, आप खुद अपने अंदर से कितने हैप्पी रहते हैं, और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है सब्जेक्टिव वेलबींग का, जो हम मोर रिसर्च में यूज करते हैं। रिसर्च में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ क्वांटिफाई करना होता है, कुछ क्वालिफाई करना होता है, और हमें कुछ प्रूव करना होता है। हैप्पीनेस है लेकिन उसको प्रूव कैसे करते हैं? डिफरेंट पैरामीटर्स से, डिफरेंट स्केल्स की मदद से। सैडनेस के साथ भी यही है, लेकिन वेलबींग वो एक क्वांटिफाइबल मीनिंग ऑफ बीइंग वेल है जो हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च और पॉजिटिव साइकोलॉजी के डोमेन में। So, can I say like well-being is like more connected again with feelings, right? Some way. Yes, हाँ, स्पेशली स्पिरिचुअल वेलबींग, Exactly. क्योंकि ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग है इंडिविजुअल की अपने बारे में, अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट, एंड जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जहां से हम सब शुरुआत करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के लिए, पूछने के लिए हु एम आई। कुछ लोग रिलीजन के रास्ते से जाते हैं, कुछ लोग बॉर्न ही वैसे होते हैं जो हमेशा ही ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं और ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं और पता करना चाहते हैं who am I beyond the body and the environment we are in. Some kind of people like me who are always searching for it. Well, like most of us and most of our audience who has joined Yes. today. Correct. So true. So thank you for this, giving such a great understanding of wellness and well-being. So now tell me something. How does it spirituality and psychology have this connection? So in today's world, like mental and spiritual wellness का क्या connection है? Connection तो ऐसे है, अगर आपको वो सॉन्ग याद है, absolutely everybody in the whole wide world needs love. Similarly, we need mental health and spiritual wellness. I've been practicing as a psychologist for now almost 8 to 10 years, and जो मेरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है वो यूंगियन साइको एनालिसिस रहा है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। एंड उन्होंने, सीजी यूंग ने एक लाइन बोली थी, योर लाइट एंड लाइफ लाइक गॉड the father of whom man was born. If therefore you learn to know yourself, you will return to life. Knowing yourself, वही वाली बात आ गई फिर से। In knowing And yourself. absolutely in the whole wide world, we need to know ourselves to be mentally and spiritually well, or attempt to be that. So knowing yourself is probably the first first step in the journey of well-being or wellness anyway. So tell me something like how people will come to know if they need a professional for their mental health related issues. So when people can understand themselves, because it's like
when it is like understanding yourself first coming. So if someone needs an professional help, so how they will understand first? इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जर्नी पे कई बारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, विच आर आउटसाइड इन आवर इन्वायरमेंट सोशली, एंड हाउ वी परसीव देम बैक थ्रू आवर कंडीशनिंग। बिफोर वी बिगिन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, हम भी तो सोशल बीइंग्स हैं, हमें भी एक कंडीशनिंग मिली हुई होती है। जब लाइफ इवेंट्स हमारी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट करने लगते हैं, दे कॉज अ ब्रेक डाउन, एंड हमारा इनर बैलेंस टूटता है, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को नहीं प्रोसेस कर पाते और हम कोप नहीं कर पाते चैलेंजेस के साथ, तब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प सीख करनी जरूरी होती है। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या करेगा आपके लिए? वो आपकी मदद करेगा टू डेवलप एन इंसाइट टू कोप बेटर एंड टू गेन न्यू कोपिंग स्किल्स टू फंक्शन बेटर। जिंदगी एंड उसके चैलेंजेस तो हर बारी चेंज होते रहते हैं, और इसलिए न्यू कोपिंग स्किल्स हर बारी, एक आपके चैलेंज के लिए वो सेम सेट ऑफ कोपिंग स्किल्स कभी नहीं सिमिलरली वर्क करेंगे। आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपने आप को हमारे इस एरिया में, संगीता, ऑनलाइन स्पेस में अपने आप को हीलर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट बुलाते हैं, और एक किस्म से एक मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस का मेस भी क्रिएट हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आपके थ्रू मैं ये लोगों को बताऊं कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बाय डेफिनेशन, बाय अ वर्किंग डेफिनेशन, एक इंडिविजुअल है जो बेसिक डिग्रीज में ट्रेन हुआ होता है, जैसे बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, एंड आगे जाके वो मेंटल हेल्थ के डोमेन में स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता है इन डीलिंग इन ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस। इंडिया में एक कंसेंसस है ये, क्योंकि अभी तक कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है हमारे पास कि हम अपने आप को एमए की डिग्री के बाद एक साइकोलॉजिस्ट बुला सकते हैं, और हमें अपने आप को डिफरेंट थेरेपीज एंड मोडालिटीज में ट्रेन करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनके पास एमबीबीएस एंड एमडी डिग्री होती है, वो आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही आपको साइकेट्रिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। जो बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, वो हमारे कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो लोग डायग्नोज कर सकते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और मैनेज कर सकते हैं अलोंग विद द साइकेट्रिस्ट आपकी दवाई कैसे आपको डील कर रही है आपके इनर वर्किंग के साथ, और आपको स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं उसके साथ कोप अप करने के लिए। फिर जो तीसरी रंग ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, जहाँ पे आप मेरे जैसे एक प्रोफेशनल को पाएंगे, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स। हम सिम्टम्स रिकग्नाइज करते हैं, हम एक सपोर्टिंग आर्म टू साइकियाट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं टू मेंटेन द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एंड वर्क टुवर्ड्स प्रिवेंशन थ्रू थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमें ट्रेनिंग मिली होती है। मैं आजकल अपने ब्लॉग पे, अपने प्रोफेशनल ब्लॉग पे एक सीरीज लिख रही थी, व्हाट इज साइकोलॉजी, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। एंड आपसे बात करके आज संगीता लगता है अब मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, हु कैन नॉट बी अ साइकोलॉजिस्ट। क्या कहते हो संगीता? Yeah, so do you think like psychology and like spirituality का जो connection है वो समझना बहुत जरूरी है, and how and people need to understand like even like there are psychological therapies when you use, so there are spiritual route that us even trained psychologists are aware, and they can be like guide for the spiritual route that can be applied in kind of therapies for the things, and that spiritual and mental life that way can be maintained like together that way. So what do you think in that?
Yes, of course, it can be maintained together. Knowing yourself emotionally and mentally brings in an awareness of the question when we begin to ask who I am. ये spiritual inquiry जो एक awareness of knowing yourself से आती है, वो हमें existence के बारे में हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए और कोप करने के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट के चैलेंजेस होते हैं। बहुत रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के एकदम बाद रिसर्च में और क्लिनिकल सेटिंग्स में हम लोगों ने देखा जैसे डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कंपैशन फटीग हो जाता है, वैसे ही बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया स्पिरिचुअल फटीग। अब आप पूछोगे स्पिरिचुअल फटीग क्या होता है? इसके कंपोनेंट्स ना कंपैशन फटीग से सिमिलर है, लेकिन इसका एक्चुअली ये है, इट इज अ डीप सेंस ऑफ एग्जॉशन दैट इफेक्ट्स अ पर्सन स्पिरिचुअल वेलबींग। जब आप कंटिन्यूअसली अपने आप के बारे में पूछते रहते हैं और आप इन्वॉल्व होते रहते हैं बाकी चीजों में, जहां पे आप अपने आप से वापस कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, देयर इज अ लैक loss of purpose and meaning, lack of energy while engaging in spiritual practices। कितनी बारी जितने भी किस्म के हीलर्स एंड बाकी लोग होते हैं, उनको लगता है अरे हम थक गए, हम ड्रेन आउट हो गए। ये है स्पिरिचुअल फटीग। और जब हमको ये फील होता है ना, तो ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, हमारे अपने अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज एंड एक लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन वन पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ, स्टैग्नेशन तो आ जाता है ना। हर कोई हमेशा वेल नहीं होता, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल फटीग को एड्रेस करें। ये समझें कि जो आपकी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं वो आप और अच्छी तरीके से अपनी डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं एंड रिकनेक्ट विद योर ओन स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड वैल्यूज। क्योंकि जो ये रिकनेक्शन है ना, यहाँ पे आपको आंसर मिलता है। जब आप ये भी नहीं कर पाएंगे, तब जरूरी है कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं टू हेल्प यू अवॉइड द इवेंचुअल बर्नआउट or a triggering of a mental health issue. Yeah, very true. Because in spiritual healing, what happens? Like there's a lot of energy connection and energy exchanges happens. So others persons, after all, energies affect the healer sometimes. So there are some certain grounding and protection things that we do. But yeah, as you said, like when you are healing continuously to a certain set of people, so there you are like bound to get affected at certain points. So in that case, when it is like you are getting overwhelmed or like too much of as you the term used, the spiritual fatigue hota hai, so of course the healer also needs the healing. So there are certain spiritual modalities, and if it is like just the spiritual way, can be also like taken to the the proper psychologists, the therapist professionals that can also help the healer to get in a better way, so that they can actually help in other spiritual journey in better way. What do you think? Thank you, Sangeeta, for reiterating this fact. हाँ जी, of course, spiritual realm में हमारे पास सिर्फ tools and techniques of guidance हैं, जो एक इनिशियल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एक हैंड होल्डिंग ऑफ हमारे कलेक्टिव ह्यूमन बिलीव्स। एंड एज साइकोलॉजिस्ट वी कंसिडर इट वन ऑफ द वेज दैट इंडिविजुअल्स इंडल्ज इन सेल्फ केयर। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं अबाउट स्पिरिचुअल वेलबींग, अबाउट स्पिरिचुअल सेल्फ केयर मेथड्स, एंड उसमें ये नजर आता है कि कभी कभी एक स्टैग्नेशन होती है, या जिसको ब्लॉक बोलते हैं, एक इनएबिलिटी टू इंटरैक्ट और द इनएबिलिटी फॉर दोस थिंग्स टू वर्क ऑन एन इंडिविजुअल। जब आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे इमोशनली एंड मेंटली, तो एक स्पिरिचुअल टूल्स आपको कैसे हेल्प करेंगे? वो आपके अंदर तक ही नहीं पहुंच रहे। इसलिए आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी वहां पे जरूरी पड़ जाती है कि आप अपने ये ब्लॉक्स हटाएं, आप अपने बारे में डीपर एक साइंटिफिक तरीके से समझें। So yeah, so science and spirituality का
प्रॉपर ब्लेंड होना आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट to have a balanced way so that it actually can be taken parallelly in science, science which is like psychology and like spirituality and the occult science. So it has to run and in a balanced way, well mixed hona, understanding hona बहुत important है. That's why I think the spiritual healer and therapist, psychologist can work together and like bring the magic for the everyone. So they, because to understanding where, and it's very important to understand at what point you need, जब diagnosis होगा तभी आप treatment कर पाओगे. So at what point you need what, that understanding is important and how it can be blend. So tell me, suggest some quick techniques and tips, if you can, so to maintain one's mental health and through like different spiritual paths, which can be applied daily, because in today's life everyone is running, so nobody is be liking to spend a long entire day. So is there any quick techniques 5-10 minutes का जो कोई भी apply कर सकता है? What do you suggest and recommend? जैसे आपने कहा संगीता, द इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग विद एंड स्पिरिचुअलिटी, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है. ईस्टर्न फिलोसफीज और बाकी सारे वर्ल्ड रिलीजन्स में आपको कहीं ना कहीं एंड ओल्डर सिविलाइजेशंस में ये सारी चीजें मिलेंगी. वहां से उठ के जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं, माइंडफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पॉज, उसमें कुछ चीजें निकल कर आती हैं. being grateful, being aware of your thoughts, being authentic, being compassionate, kind and being self-preserving. ये terms तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनके वर्किंग्स और ये कैसे इंटरेक्ट करती है विद स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, लोगों को ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा. लेकिन जैसे आपने कहा, एक टेक्निक जो हेल्प कर सकती है सबकी, और वो है डीप ब्रीथिंग. अगर आप कहीं पे भी हैं, आपको कुछ भी ओवरवेल्म कर रहा है और आप उस टाइम नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी, एक माइंड हमारा एक फ्रीज में आ जाता है जब एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है. अपने आप को समझने के लिए और सिचुएशन को समझने के लिए एक डीप ब्रीथिंग टेक्निक है. आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बस अपनी आईज क्लोज कीजिए, अपने आप को सेंटर कीजिए. Be aware about your body, that you are in this body right now, and whatever is happening outside is happening outside, and just focus on being there with yourself. जैसे जैसे आपको अपनी एक awareness होएगी about your body, then start breathing in and breathing out 3 times. Let's do it right now. Close your eyes. Feel the presence of your body and breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And to this, as you repeat it 3 times, in your mind, keep telling yourself, I'm grateful and thankful for my resources and experiences. I'm grateful and thankful for my resources and experiences. And when you're ready, open your eyes and just move your hands like this and your feet. Wiggle your toes. You can always wiggle your fingers and toes and nobody will think it is a strange act. And that way, what happens is a little body movement causes an instant दिमाग की वायरिंग का शिफ्ट, जिससे आप जो भी सिचुएशन है आपके सामने उसको अलग तरीके से सोच सकते हो और एक मोर सेंटर्ड वे में बोल सकते हो. आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप एक्ट करना शुरू करोगे.
very important, very और well ये बात said. शायद संगीता भी अग्री करेंगी. Very much. Like we need to understand, not to react and respond. And yeah, totally, this breathing technique is a wonderful quick fix thing, I'll say. Is amazingly it, in any situation, whenever कुछ समझ में नहीं आए, सब छोड़ दो and ब्रीदिंग पे फोकस करो. एज स्पिरिचुअलिटी में भी हम, स्पिरिचुअल हीलिंग में भी हम वही बोलते हैं, लाइक इवन इट्स अ काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर मेडिटेशन. So when you are focusing on your breathing patterns, so it helps you to calm down instantly, and being aware of yourself, being aware of the other things. So it's really important, and I'm so glad that as a professional psychologist, you are like giving that kind of techniques which is so aligned with spirituality. So there is definitely a great sync between the two, as we always thought. Like, wonderful. So yeah, wow, this was actually so mind-blowing, and this getting this such a deep understanding and the connection of this both psychology and spirituality. So I'm so thankful, Aarti, for sharing such significant knowledge with us all. Like, Thank you, Sangeeta. Thank you, Arcade Universe, for inviting me to this episode of Revival Sutras. And the conversation has surely been a balancing act for me as well. And हमारे viewers के लिए, संगीता, अब मैं बता दूं लोगों को. हाँ, बता दो. We are taking our reviving your wellness a step forward, and we would be bringing you a workshop, Sangeeta and I together. आपको और जानना है, अगला एपिसोड रिवाइवल सूत्रस का अगले संडे. संगीता तो होंगी ही आपके साथ, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो कमेंट्स में आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी. संगीता है आपके साथ. संगीता इज योर कोच एंड योर मेंटर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, एंड आई एम देयर टू see you through your psychological challenges. Thank you. Thank you so much, Aarti, for sharing this. And yes, friends, stay tuned for more updates and all the details coming soon, and where we'll be blending spirituality and psychology together in a wonderful way for your overall wellness. We are like at the moment at the end of the session. So let me just quickly recap it for you. So be well, be aware of your emotions first and others around to balance your spiritual journey in your daily life. Do practice the techniques that Aarti has mentioned, whatever suits you the best. And this breathing technique is really amazing and really quick fix thing, which you will not like to miss it ever, I'm sure. So do practice that and let us know how you feel about it. और कैसा लगा आज का एपिसोड, हमें जरूर बताइएगा. प्लीज डू शो योर लव इन लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर. और आर्किड यूनिवर्स को जरूर फॉलो कीजिए फॉर ऑल मोर फ्यूचर अपडेट्स. मिस आरती आहूजा से कनेक्ट करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है इन द कमेंट सेक्शन. डू फॉलो दैट एंड प्लीज डीएम हर फॉर ऑल योर क्वेरीज. इसके साथ आई विल टेक योर परमिशन टू टेक योर लीव टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट संडे and with another interesting episode to contribute in your journey. Till then, do take care of yourself, your mental, physical and spiritual health. Stay safe, stay happy, and good night.